वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कैलकुलस। कैलकुलस क्या है उसको देखते हैं। कैलकुलस, द वर्ड कैलकुलस इज लैटिन and means small stone. Calculus is the mathematical study of change. It focuses on instant rate of change and accumulation. क्या है calculus? क्या है जो changing किसी चीज़ में आते हैं उसकी स्टडी को हम calculus कहते हैं। कैलकुलस जो है वो दो चीज़ें होती हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। जो डिफरेंशियल कैलकुलस होती है वो फोकस करती है स्टडी ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होते हैं? एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स। जो किसी चीज़ का हमने एरिया निकालना हो रेगुलर इरेगुलर शेप्स का, तो वो हम क्या करते हैं? इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस में करते हैं। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो फोकस करती है रेट ऑफ चेंज को। Differential calculus involve the process differentiation or determination of derivative. Thus, formal definition of derivative involve something is called limit, which is where the study of calculus begins. डेरिवेटिव में जो चेंजिंग आएंगी, हम जो रेट ऑफ चेंज लेंगे किसी की तरफ, जो उसकी लिमिट की वो डेरिवेटिव हमने। Differential and integration are connected through the fundamental theorem of calculus. Essentially, differential and integration are opposite operation or under each other. ये क्या है? दोनों एक दूसरे क्या opposite operation होते हैं, integration and calculus. Calculus is considered to have been developed independently in the 17th century by Isaac Newton, Gottfried Leibniz. Calculus has many applications: science, engineering, and economics. We have some examples related algebra and geometry. The graph below is function that model the distance a car in the form of starting point. Starting point, we take a starting point and move rate of change. We have rate of change distance per unit. जो रेट चेंज होगा वो डिस्टेंस पर टाइम होगा, जो मतलब टाइम के लिहाज से जो ग्राफ चेंज हो रहा है वो होगा।